bear with me. Please, no. Dr. Abhishek Singhvi. Sorry. Please take your seat. Dr. Abhishek Singhvi, you are holding the floor. Go ahead. Honorable Chairman, sir. Honorable Chairman, sir. Honorable Chairman, sir. Members of this august House. Mic is on. Honorable Chairman, sir. Honorable members of this august House. As I rise to oppose this retrogressive bill, I ask why no government since 1992, when Delhi's special constitutional status was created, be it a BJP government or a Congress government, be it any other color of the political spectrum, be it the same political party in the center and the NCT, or be it different parties, not one of them has tried to overrule two constitution bench judgments. Not tried to overrule two constitution bench judgments on the status. Please. Go ahead. The status of NCT. Why did no government create an authority where the Chief Minister of Delhi is in a minority? Why did no government empower two bureaucrats to overrule an elected Chief Minister? Why did no government make the Honorable LG, who is a constitutional figurehead except in three areas, into a super CM? And finally, why did no government make it available to the LG's powers to appoint heads of regulatory agencies, large number, all of Delhi, for Delhi, by Delhi, funded and budgeted by the NCT government, but the power of appointment of its heads is with the LG. Honorable members of this august House, this government and this bill has done it all. Something not done earlier. Friends, why was it not done earlier? Because unfortunately, it is the fitrat of this control freak Sarkar, whose vendetta, whose visiting card appears to be vendetta, whose identity badge is of a graceless and fuming electoral loser. Yes. Whose approach is to control by hook or by crook, usually more by crook and less by hook. Yes. So friends, make no mistake about it. As I will demonstrate shortly, this bill is completely unconstitutional. It is fundamentally anti-democratic. It is a frontal assault on the regional voice and aspirations of the people of Delhi. It violates all principles of federalism, all norms of civil service accountability, all models of assembly-based democracy. And of course, it violates, as I will demonstrate, the basic structure. Friends, it is not about this NCT government or that. It is the deliberate regression from a people's government guaranteed to the people of Delhi 30 years ago. And hence it is a decimation of the most fundamental constitutional values on the basis of which 239AA and that entire chapter was passed. That is why, friends, we must all collectively rise to oppose it. Because otherwise, friends, Iqbal's words will haunt us when he talked of Tariq ki nazrein, and he said, "Lamhon ne khata ki, sadiyon ne saza pai." Friends, we must also collectively oppose it, because someday this anti-federal knock will come at your door. ये उनके लिए सोचने की बात है जो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं या समर्थन करने की घोषणा कर दी है, जो आज दिल्ली सरकार के साथ हैं, शायद कभी आपके पास भी जल्द ही आपके साथ भी ऐसा ही हो सकता है। सबका नंबर आ सकता है। उस वक्त जब नंबर आएगा तो आपको सिर्फ याद आएंगे मार्टिन न्यूमेलर के वर्ड्स। वो पुराने जाने माने शब्द हैं, लेकिन मैं दोहरा रहा हूं। First they came for the socialists and I did not speak out because I was not a socialist. Then they came for the trade unionists and I did not speak out because I was not a trade unionist. Then they came for the Jews and I did not speak out because I am not a Jew.
Then they came for me and for you. And there was no one left to speak for us. Friends, let me start with my two heads. What does this bill do textually first? And secondly, what is the consequence of that text? Let me deal with these two aspects first. दोस्तों, ये बिल एक सिविल सर्विसेज अथॉरिटी बनाता है और उसको व्यापक शक्तियां देता है सुझाव देने की, हर नियुक्ति, हर स्थानांतरण, हर चीज के बारे में, ग्रेड ए अफसर से लेके दानिश अफसर तक। व्यापक है, विशाल है। कौन किसी और की सरकार में वित्त का सेक्रेटरी बनेगा, कौन पीडब्ल्यूडी का सेक्रेटरी बनेगा, उनके बीच में अदला बदली कब और कैसे होगी, ये माननीय एलजी करेंगे निर्णय, न कि चुनावित सरकार। ये बड़े स्पष्ट प्रावधान है, मैं अभी आपको प्रावधान के नंबर नहीं दे रहा हूं। दूसरा, जितने भी सतर्कता के अधिकार क्षेत्र हैं और जितने भी नॉन सतर्कता, नॉन विजिलेंस, वो सभी केसेस अनुशासनहीनता के विषय में सब इस अथॉरिटी में आएंगे सुझाव के लिए और माननीय एलजी के पास निर्णय के लिए। इसका उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है। उद्देश्य है एक भय और हिस्टेरिया का माहौल बनाना, एक खौफ पैदा करना, जिससे कि आप इन सभी सचिवों को कंट्रोल कर सके, जो कि दिख रहा है दिन प्रतिदिन। तीसरा, ये अथॉरिटी में 3 व्यक्ति हैं, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री को बहुत बड़ा ओहदा दिया है, अध्यक्ष बनाया गया है। ये अजीब सा अध्यक्ष है दोस्तों। कोरम है 2 लोगों का, ये एक चेयरमैन है बिना चेयर के। मैंने वैश्विक और भौगोलिक रूप से आज तक कहीं नहीं देखा मेरे सीमित अनुभव में कि एक चुनावित चीफ एग्जीक्यूटिव 2 सचिवों के नीचे आएगा। ये 2 सचिव बैठ के निर्णय करेंगे, ये 2 सचिव बैठ के निर्णय करेंगे और वो मुख्यमंत्री वहां खड़ा होगा, देखता रहेगा, चुप्पी साधेगा या अपना डिसेंट नोट करवाएगा। और उसके बाद, और ये सब प्रावधान है, एक एक चीज में जो बोल रहा हूं प्रावधान है, उसके बाद ये निर्णय और सुझाव जाएगा पहले सुपर सीएम के पास और उसके बाद सुपर बॉस जो हमारे सामने बैठे हैं माननीय गृह मंत्री, ये सब गृह मंत्रालय में आएगा। चौथा दोस्तों, चौथा, जितने बोर्ड्स हैं, समितियां हैं, संस्थाएं हैं, वो सब, और इसमें बहुत हैं, महत्वपूर्ण हैं, अल्पसंख्यक संघ, दिल्ली सूरेज बोर्ड, दिल्ली जल बोर्ड, सो मेनी, लेबर वेलफेयर बोर्ड, वक्फ बोर्ड, ऐसे 20 की सूची हमने दी है न्यायालय में। उन सब की बजट बनाएगा ये एनसीटी सरकार। उनके काम होंगे एनसीटी के लिए, एनसीटी के लोगों के लिए, लेकिन उनके अध्यक्ष, उनके हेड को वहीं से अपॉइंट होंगे, सुपर सीएम या गृह मंत्रालय से। 5वां, जो दूरगामी नीतियां हैं सभी सिविल सर्विस के लिए, उनके टेन्योर के लिए, उनके स्थानांतरण के लिए, उनकी नियुक्तियों के लिए, कौन सी पोस्ट नाजुक है, कौन सी पोस्ट सेंसिटिव नहीं है, और उपयुक्तता, वर्ड इस्तेमाल किया सूटेबिलिटी, उपयुक्तता इस अफसर की इस पद के लिए, ये सब, और हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन होना चाहिए, ये सब माननीय सुपर सीएम, और अंततोगत्वा हम जानते हैं कि जो सब चीज करती है नियंत्रण, वो होम मंत्रालय। हर छोटी चीज के लिए, एक हर बड़ी चीज के लिए पूर्ण रूपेण व्यापक निर्बाध टेक ओवर, कब्जा, निर्बाध कब्जा है। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, आप जैसे उच्चतम पद पर विराजमान महानुभाव, क्या आप अफसर क्लासेस के लिए निचले से लेके सेक्रेटरी तक नीतियां आप बनाना चाहते हैं? कम से कम वो तो एक छोटे ओहदे वाले मुख्यमंत्री के पास छोड़ दीजिए। Sixthly, friends, the secretary, this is amazing. The annals of history of legislation have not seen bills like this. The secretary of the department is made in charge of preparing and authenticating every memo, including cabinet notes. Not bad yet. Disagreements between the secretary and the minister have to be recorded in writing and then sent to the LG
And the secretary in the act itself, in the bill itself, says that the secretary may write on the note which he sends to the LG why the secretary thinks that the Council of Ministers is taking a decision contrary to law. Any law. Law means any law. Any law of India, in the opinion of the secretary, is being violated by the Council of Ministers, goes to the LG. It makes, friends, the elected government hollow. A chief minister paralyzed, unable to act. Any minister shivering before his or her secretary. And the bureaucracy looking up to the LG even for sneezing. And the LG, of course, looking up to the Home Ministry. ऐसे हालात को देखकर मुझे वो पुराना शेर याद आया दोस्तों, एक काफिले वालों तुम इतना भी नहीं समझे, लूटा है तुम्हें रहजन ने रहबर के इशारे पर. This bill, friends, eliminates 2 out of the 3 interlocking, fundamental, distinct chains and institutions which form the bedrock of any assembly-based democracy, and therefore they hit at the very root of the basic structure. These 3 interlocking chains, which are discussed in 10 paragraphs of the Supreme Court judgment, I wish somebody had read the judgment carefully before drafting the bill, are: 1, a political executive through the Council of Ministers answerable to the people; 2, a civil service answerable to the political executive and hence accountable to the people through the political executive; and regulatory agencies which are an integral part of governance in any system. The bill simply eliminates number 2 and 3. Out of 3, it takes away 2. Friends, the object is not to make Hamlet the Prince of Denmark, not even the slave of Denmark, but to take over Denmark itself. It is to make Denmark a hollow shell, substitute NCT for Denmark. Its second impact is that it eliminates the accountability of the civil service completely. In doing so, it eliminates the very concept of Westminster-style democracy, which Delhi is supposed to be fully Westminster-style minus 3 subjects only. The civil service, friends, after this bill, will jump, bend, crawl, answer at the behest of an external agency, be it the Home Ministry or the Super Chief Minister. There is not even a token diarchy of powers between the CM and the LG. It converts an impartial civil service into a dictatorial civil service. Shame. It gives a real example of that forgotten serial which I love to watch and all of you have watched. Yes, Minister. The civil servant is saying only no, Minister. Remember what Nehru said about the ICS. That time, Indian Civil Service says this is neither Indian nor civil, nor does it provide service. I'm not sure how accurately it will apply in 2023, but I think he came very close to it. एक म्यान में 2 तलवार नहीं है ये केस. म्यान भी एलजी के पास है और तलवार भी केंद्र सरकार के पास है. मुख्यमंत्री एक कोने में खड़े होकर तमाशा देख सकते हैं सिर्फ. My third head of submission to this august house, friends. This bill seeks to amend the constitution by an act of parliament. The constitution and the debates underlying it all wanted Delhi to have all powers minus 3. This bill adds a 4th to those 3, and it does it magically without a constitutional amendment. It is indeed magic, even if it is black magic, because you can amend a constitution without a constitutional amendment. 4th, decimating 2 out of the 3 prongs of a Westminster-style democracy, which has an answerable and accountable civil service and a regulatory agency, clearly violates the basic structure, because the basic structure of an assembly-based democracy includes these 3 interlocking chains. I believe that that would be a very likely Supreme Court conclusion if at all this bill is passed. Fifthly, it also violates the basic structure in another manner. The principle of decentralized federal government that has already been a part of the basic structure from the days of Bombay in 1993, around the time, by the way, when 239AA was created. If there is one animating bedrock philosophy underlying 239AA,
it is decentralized federal governance. Otherwise, why not keep Delhi as a mere large municipality under central government's control? अडवाणी जी हुआ करते थे बहुत बड़े अधिकारी ऐसे म्युनिसिपल सेटअप में पहले. Why not a mere union territory? You know, there are 10 of them. Delhi is the only one to have been given the constitutional status by a constitutional amendment. No other union territory. Why? Para 77 of the 2023 judgment partly answers that. I quote, "In the spiral of cooperative federalism, the Union of India must exercise its powers within the boundaries created by the Constitution. NCT Delhi, in having a sui generis federal model, must be allowed to function in the domain chartered for it by the Constitution. The Union and the NCT share a unique federal relationship. It does not mean that NCT is subsumed in the Union merely because it is not a state." ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये उच्चतम न्यायालय के शब्द हैं. Friends, Delhi alone, out of 10 such territories, was given this constitutional status. Not only because federalism and the aspirations of the people of Delhi were recognized, but the idea was that you will not be able to amend it out of shape, out of character, without a constitutional amendment. You don't have it today. You have a statute. This arrogant government, and this is very interesting, this arrogant government first tried it by invading Delhi's special status in 2016 and 17. Forgotten now, by executive action without even a statute. We argued and we got a 2018 first Constitution Bench judgment, which struck it down. It did it again by a second notification without a constitutional amendment and lost it, and the judgment came in 2023, few months ago. But friends, unfortunately, there is no cap on deliberate foolishness. There is no bar to repetitive constitutional error. They have done this again. This time they've upgraded it from a notification to a statute, but still without a constitutional amendment. And even if this bill is passed, which I am sure it will not be, the result will be the same a third time. History will repeat itself. Friends, constitutional stupidity masquerading as power is by no means a new phenomenon, especially when reason falls on deaf ears. The result is always the same: जिहालत, हिमाकत और नफरत. संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर दोस्तों लम्हों की बात नहीं है, सदियों की बात है. और अगर संविधान को सदियां सुनेगी, लम्हे नहीं, तो हम सबका उत्तरदायित्व बनता है कि हम उस संविधान की आवाज की हिफाजत करें. क्योंकि अदर नहीं तो संविधान चीख चीख कर कहेगा, मुझे लम्हे नहीं, सदियां सुनेंगी, हिफाजत से मेरी आवाज रखना. आज आप केंद्र में हैं, मैं आप पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं. आज आप ट्रेजरी बेंच में हैं, कल कोई और होगा. ये कायम रहेंगे कि अच्छा किया आपने हस्तक्षेप किया, क्योंकि आपके कायम शब्द के लिए मेरे पास एक जवाब है. तुमसे पहले भी वो जो शख्स यहाँ तख्त नशीन था, तुमसे पहले भी जो यहाँ शख्स तख्त नशीन था, उसको भी अपना खुदा होने का इतना ही यकीन था. बल्कि बशीर भद्र को कृपया भूलिए नहीं. आप लोग सब जानते हैं उसको, मुझे भी कोट करते रहते हैं आप में से कई. बशीर भद्र को उसने ही कहा था, शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है. शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है. जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है. तो इसलिए कायम शब्द का इतना अहंकार नहीं होना चाहिए. Sixthly, friends, let me read some seminal words in the 2023 judgment. Now, these are going to take a little bit of time. It's a longish quotation, but it's very important for this house. 10 paras, and I'm only reading selectively, of the Supreme Court. It's completely forgotten. I'll read a little quickly and fast. This is a unanimous judgment, not a single dissent. And these words have been ignored, and they are not my words. Even though it's long, pardon me, allow me to read it. It's the highest court of the country.
In a democracy, each word I'm reading is a quotation, and I can assure you these words will come to haunt you. In a democracy, accountability lies with the people who are the ultimate sovereign. The cabinet, consisting of elected representatives, is collectively responsible for the proper administration of the country and is answerable to the legislature for its actions. The government is responsible for the decisions and policies of each of the ministers and of their departments. This creates a multi-linked chain of accountability where the legislature is accountable to the people who elected them and the government is collectively responsible to the legislature. It's quite amazing. Collective responsibility is an important component of parliamentary democracies. The day-to-day decisions of the Council of Ministers are to be implemented by a neutral civil service under the administrative control of the ministers in order to ensure that the functioning of the government reflects the preferences of the elected ministers and through them the will of the people. It is essential to scrutinize the link of accountability between the civil service professionals and the elected ministers who oversee them. Under the Westminster parliamentary democracy, civil service constitutes an important component of a triple chain of command that ensures democratic accountability. हर शब्द की धज्जियां उड़ा रहा है ये बिल, हर शब्द की. The triple chain of command is as follows. Civil service officers are accountable to the ministers, ministers are accountable to parliament, and thirdly, parliament legislature is accountable to the electorate. An unaccountable and non-responsive civil service may pose a serious problem for governance in a democracy. It creates a possibility that the permanent executive, consisting of unelected civil service officers who play a decisive role in the implementation of government policy, may act in ways that disregard the will of the electorate. In a federal polity, a fundamental question which arises is which would be the more appropriate authority to whom the civil service officers would be accountable. Everything which the bill is saying is dealt with here. In a democratic form of government, only one more para is left, friends, the real power of administration must reside in the elected arm of the government, subject to the confines of the Constitution. A constitutionally entrenched and democratically elected government needs to have control over its administration. If a democratically elected government is not provided with the power to control the officers posted within its domain, then the principle underlying the triple chain of command of collective responsibility would become redundant. That is to say, if the government is not able to control and hold to account the officers posted in service, then its responsibility towards the legislature as well as the public is diluted. The principle of collective responsibility extends to the responsibility of officers, who in turn report to the ministers. If the officers stop reporting to the ministers or do not abide by their directions, the entire principle of collective responsibility is affected. Therefore, GNCT ought to have control over the services. Now, I know there's a statute. I'll deal with their best defense, which has been raised by the government. But first, I've read to you 10 paragraphs. For those interested, from 102 to 111. Clearly, friends, this bill is therefore, in the light of these paragraphs, stillborn. It does not, indeed cannot remove the basis, which is this of the unanimous Constitutional Bench judgment. These quotations I have just read are bedrock principles. This bill is simply providing provisions directly contradicting these bedrock principles. It cannot simply nullify a unanimous Constitutional Bench. It must at least amount to removing its basis and rendering that judgment inoperable. I have just read to you passages which are impossible to remove the basis of. These are bedrock principles. How do you remove the basis? It is therefore trying to overrule directly a Supreme Court judgment. It therefore is an impermissible constitutional exercise if you try to nullify a Supreme Court judgment without removing its basis. It is not only does this bill insult the people of Delhi, it insults the Supreme Court. It insults our intelligence. कभी दिल में ख्याल आता है कि जैसे 1935 वाले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में चुनाव जरूर रखे थे, लेकिन पावर नहीं रखा था कुछ भी. क्या यही कॉलोनियल मॉडल का आप कार्यान्वित कर रहे हैं आज इस बिल द्वारा? हम आपको चुनाव दे रहे हैं, पद दे रहे हैं, लेकिन पावर नहीं दे रहे हैं. Is this not an illegal power grab through the back door? Yes. Now, seventhly, friends, I come to the main defense, the only defense of the government. Because you should know this, how wrong and how fallacious it is. It is based on clause 7A and B of the article. Can I just read? None of you need to be lawyers to understand this, the text of the, and you'll get the answer automatically. This is the entire defense. Parliament may by law make provision for giving effect to or supplementing, mark the word, for giving effect to or supplementing
the provisions contained in the foregoing clauses and for all matters incidental or consequential thereto. Friends, these words on bare text mean that to reinforce, operationalize, effectuate and implement the earlier provisions, which provide the entire architecture for Delhi, Parliament can make laws. This was a provision put so that every time something is to be made to fill a gap, to plug a hole, you don't have to have a constitutional amendment. Parliament is sufficient to plug that hole, to reinforce the Delhi's architecture. Friends, the short point is, can you destroy or decimate that architecture and structure by resorting to a provision that says that the power is exercisable to reinforce it or implement it? ये इस प्रावधान के साथ विश्वासघात नहीं है क्या? 7A and 7B were created when implementing the true letter of you could reinforce or plug the gaps without amending the constitution. It can never be used to destroy, to supersede, to bury that architecture itself. If this ridiculous interpretation is accepted, does it mean that by this brute parliamentary majority, today you have transferred services to the central government? Tomorrow you will do this for each item: electricity, parks, highways, Waqf board, labor board. Then why not have Delhi as a municipality? Why create the constitutional architecture? And that too by using clause 7, which says supplement, reinforce, implement, incidental. At the end of para 46 of the 23 judgment, which nobody appears to have read, as far as the bill makers are concerned, it says again, if we interpret the phrase insofar as such matter is applicable in a manner, insofar as such matter is applicable to union territories, in a manner to exclude a greater number of entries than what is already excluded, that is, in addition to 3, it will defeat the very purpose of granting a special status to NCT. This is the Supreme Court in para 46. In other words, friend, this government, like Alice in Wonderland, says words will mean what I say they will mean. That's their interpretation of 7. I will use 7 as a Brahmastra, not to supplement and implement 239AA, but to supplant it, to reduce it to vanishing point. The scalpel created to heal, to cauterize, to cure, to fill gaps, to make you more healthy, will now be used to stab and kill. Obviously, only Alice in Wonderland in this government is on the same page on this. दोस्तों, ये सब प्रावधान जैसे क्लॉज 7 है और इस तरह प्रकार के प्रावधान कई जगह होते हैं, आम चीज है, लोगों की आवाज को ज्यादा सशक्त बनाने के लिए है, विकास और समृद्धि की गति और दिशा को प्रोत्साहित करने के लिए है, न कि वोट डालने वाली जनता को निहत्था बनाने के लिए, उसको बेबस करने के लिए। इस बिल ने ऐसे सभी उद्देश्यों को अपने माथे पे उल्टा करके लग दिया है। संविधान को इस प्रकार से विकृत करेंगे आप तो परवीन शाकर के शब्द पूरी तरह से लागू होंगे। ए मेरी गुलजमी तुझे चाह थी एक किताब की। अब संविधान वाली किताब की बात कर रहे हैं। ए मेरी गुलजमी तुझे चाह थी किताब की, अहले किताब का मगर क्या तूने हाल कर दिया। Those in the treasury benches adopting this are actually distorting it out of recognition. The fundamental error of the central government and of the Honorable Home Ministry is to confuse the existence of power with the validity of its exercise. For the last several days, we've been hearing curtain raisers coming from the Home Ministry that we have the power. We are not talking about competence. The question is, if you have the power, its existence is subject to substantive limits. 3-4 minutes more. What you do not have is the power to cross the Lakshman Rekha, which this bill is designed to cross. The question of competence to pass a law, which I am not at all addressing here, is quite different from whether the law is a valid exercise of such competence. Not when it violates the basic structure, not when it violates substantive provisions. Friends, the bill is designed to violate specifically all those substantive limits. This is beyond the remit of any statutory bill. Whether even a constitutional amendment can do it, we will see when they bring a constitutional amendment in a 4th round. But the statute being lower than the constitution must go. The constitution is itself challengeable if it violates the basic structure.
That stage has not come. Turning now to my eighth head, and I'm finishing very quickly, just give me a few minutes more. It is convenient to forget, and this you'll be interested to know. Now that we are having a bill, we tend to forget this. There were no exigent circumstances on 19th of May when you passed the ordinance. The Supreme Court has said in 100 judgments, you must demonstrate how, quote unquote, it is necessary to take immediate action. Immediate necessity is distinguished from mere desirability. These are not my words, they're Supreme Court words. Expression necessity coupled with immediate action conveys the sense that it is imperative due to an emergent situation to promulgate an ordinance. Now I want to tell you, on 11 May, 2 महीने की जिरे और बहस के बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने निर्णय दिया. 6 दिन बाद 17 मई को कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया ऑर्डिनेंस, लेकिन पारित नहीं किया, घोषित नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे 2 दिन बचे हैं अभी उच्चतम न्यायालय के बैठने के लिए. 19 तारीख को उच्चतम न्यायालय अवकाश पे जा रही थी. The revised time given to you by the LOP was 1 second. Some of my friends here are prepared to No, donate some time. 30 minutes. You have left only 13 minutes for Mr. Chidambaram. 2 minutes more. 2 minutes more. So you will leave 11 minutes for him. Yes, yes. And there are other people to Okay, donate go time ahead. to us. There are other people. On 19th May, 1 second. 1 second. इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन रहने के One ये second, one second. जरूरी है कि बहस अच्छी हो रही है. बहुत दिन के बाद बहस अच्छी हो रही है. सभी लोगों को सुनने में आ रहा है और नॉलेजेबल है. तो आप कंसीडर करिए, आपके हाथ में है, और एक 10 मिनट एक्सटेंड कर दीजिए. 5 मिनट. Every minute used by you, doctor, 11 will तारीख cut into the time of Mr. Chidambaram. No. Initially, both were given equal time. Then his time was increased. माननीय अध्यक्ष, Go ahead. माननीय अध्यक्ष महोदय, Last 1 minute. 17 तारीख को ये पारित हो, ये अप्रूव हो गया कैबिनेट द्वारा. इसको आप 19 की शाम को 5 बजे के बाद जब मैं घर जा रहा था कोर्ट से क्यों लाए? क्योंकि आपको मालूम है कि 19 तारीख लास्ट डे था कोर्ट के फंक्शनिंग का, उसके बाद अवकाश थी. क्या यू वेट फॉर 2 days fearful that the Supreme Court is sitting till 19th May? Is this not cheap tactics and chicanery at its worst? The deleterious effects of this ordinance were visible in the last 2 or 3 months it's been there. Governance is at a standstill. 2 bureaucrats are threatening to take majority decisions over the Chief Minister's head. The LG daily trespasses in all domains of elected reps. Heads of bodies funded and operated by NCT are approved and controlled by the Home Ministry. NCT is reduced to a fiefdom of the central government. Insubordination is at its peak. हमारी बात आप सुनते, मैं बस अंत कर रहा हूं 1 मिनट में. हमारी बात तो आप सुनेंगे नहीं, सुनते नहीं. कम से कम अपने मार्गदर्शक मंडल की बात तो सुन लिया करिए, या कभी कभी उनसे बात करते हैं, पूछते हैं, उनको भी भूल गए आप लोग. मार्गदर्शक मंडल से बात कर लीजिए, क्योंकि आपकी सरकार, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में आपके मार्गदर्शक गृह मंत्री अडवाणी जी दिल्ली को पूरा स्टेटहुड जाने का बिल लाए थे. और जब आप 2 चुनाव दिल्ली के जीते इस मुद्दे पे कि दिल्ली के पास पूरा स्टेटहुड होना चाहिए, तो मदन लाल खुराना जी, आपके पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था, कोट, फुल स्टेटहुड फॉर दिल्ली इज द रेमेडी फॉर ऑल इट्स इल्स. आज देश और दिल्ली आपसे फुल स्टेटहुड नहीं मांग रहा है. आज सिर्फ वो इतना विनती कर रहा है कि जितना बाएं हाथ दाएं हाथ ने संविधान ने दिया है, उतना बाएं हाथ से तो नहीं लीजिए. इतनी छोटी सी विनती कर रहा है. जहां तक दुख और आक्रोश का सवाल है, ये एक दुखद और खतरनाक प्रस्तावित कानून है दोस्तों. अंत करूंगा मैं ये कहकर कि ये दिल्ली के बारे में शेर बिल्कुल उपयुक्त बैठाता है. ये बिल, ये प्रस्तावित कानून चेहरे पे सारे शहर के गर्द मलाल है. जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल है. दुख और आक्रोश का हाल है. Dr. Sudhanshu Trivedi, 20 minutes. माननीय सभापति महोदय, आज जब इस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विधेयक के ऊपर मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, तो पहले मैंने विपक्ष के विद्वान वक्ता महोदय का वक्तव्य सुना तो मुझे विचित्रता का अनुभव हुआ और संपूर्ण विपक्ष को देखकर विस्मय हो रहा है. विचित्रता इसलिए कि उन्होंने कहा कि आई हैव नॉट सीन एनी पैरेलल एनीवेयर
तो मैं भी कहना चाहता हूं ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी देश की राष्ट्रीय राजधानी में उस देश की केंद्र सरकार की शक्तियां उससे अधिक शक्तियां किसी और की होनी चाहिए। मेरे विचार से दुनिया में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा। सो आई सपोर्ट व्हाट Abhishek Manu Singhvi ji has said. I am unable to find parallel anywhere in the world. दूसरा विषय जो मैंने कहा कि विस्मय का अनुभव क्यों हो रहा है, अभी देखिए उन्होंने 2 बार सुपर सीएम प्रयोग किया कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए, मगर महोदय इस देश ने बगैर संवैधानिक पद पर बैठे हुए सुपर पीएम 10 साल तक देखा है। और मैं ये कह रहा हूं कि अभी मैंने कितना सुंदर सामंजस्य देखा कि उन्होंने कहा कि समय कम हो रहा है, तो आम आदमी पार्टी वालों ने कहा हम भी समय देने को तैयार हैं। सारे विपक्ष को देख के विस्मय होता है कि कांग्रेस पार्टी जिसका कि 3 राज्यों में स्थिति यह रही कि गुजरात में वोट हाफ कर दिया, बिल्कुल बता रहे हैं, सुनिए तो, अरे सुनिए तो, बता रहे हैं। Sorry, honorable members, का वोट one second. Dr. Abhishek Singhvi was heard in rapt attention. This is the decorum of the house. No, no. Yes, I am coming to that, sir. Let me Do not get into disruptive mode. Dr. तो मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग किस तरीके से आए हैं साथ में। अरे साहब बहुत सारे शेर बोले थे, ऑर्डिनेंस के पार्ट नहीं थे, हम भी बता रहे हैं आपको। I will have to name you. देखिए इनकी I will have to name you. ठीक, You have got it as अरे a साहब क्या habit शिद्दत दिख to रही rise and है make a एक point. दूसरे को सपोर्ट करने में। देखिए इनकी स्थिति ये We गुजरात want में decorous debate here. Doctor said many things, maybe digestible, maybe indigestible. Dr. Sudhanshu Trivedi. मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि गुजरात में कांग्रेस का वोट हाफ कर दिया, पंजाब में इनका स्विच ऑफ कर दिया, दिल्ली में साफ कर दिया और आपने इनको माफ कर दिया। और उसके माफी के बाद भी मुझे लगता है अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कहा था, तो मैं भी ये कहना चाहता हूं, आप साथ में आए हैं दिल्ली के इस बिल पे, दिल्ली की जनता के लिए आए हैं या किसी और कारण से आए हैं, ये दिल्ली की समझदार जनता समझती है। तो मैं भी एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इतने समझौतों पे जीते हैं कि जमीर भी मर जाते हैं। अब यह एक संवैधानिक विषय है, संवैधानिक विषय है कि यह जिस प्रकार से संविधान में लागू होना चाहिए, परंतु उसके साथ राजनीतिक टीका टिप्पणी की जा रही है, तो एक सैद्धांतिक विषय भी आता है। तो मैं संवैधानिक और सैद्धांतिक दोनों विषयों का जवाब दूंगा। आई विल रिप्लाई बोथ द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट। देखिए माननीय गृह मंत्री जी ने लोकसभा में बहुत स्पष्ट किया था कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, यह एक विशेष श्रेणी का यूनियन टेरिटरी है, यानी विशेष श्रेणी का संघ शासित राज्य है। वैसे मुझे लगता है संघ शब्द आते ही बेचैनी ज्यादा हो सकती है दूसरी तरफ, और संघ शासित से बेचैनी और हो सकती है, इसलिए मैं यूनियन टेरिटरी वर्ड प्रयोग करूंगा। इट इज अ स्पेशल कैटेगरी ऑफ यूनियन टेरिटरी। और वैसे भी आजकल अंग्रेजी के प्रति मोह बहुत ज्यादा है, क्योंकि अपने गठबंधनों का भी नाम अंग्रेजी में ही ज्यादा रखा जा रहा है। संविधान में जो भाग 8 में उल्लिखित, वैसे तो जब मैंने टीवी चर्चा के दौरान कई बार विपक्ष के लोगों से INDIA का हिंदी फुल फॉर्म पूछा, तो पहले दिन तो लोग गूगल देख के भी नहीं बता पाए। खैर, अब मैं कहना चाहता हूं कि संविधान के भाग 8 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार, अरे सुनिए बात, देखिए संविधान के भाग 8 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार अनुच्छेद 239 से 242 तक संविधान में इस विषय का पूर्ण वर्णन है। अनुच्छेद 239AA में इसका विशेष प्रावधान किया गया है। यदि उसके क्लॉज को 239AA3B को देखें तो संसद को दिल्ली संघ राज्य यूनियन टेरिटरी से संबंधित किसी भी विषय पर कानून बनाने का पूरा अधिकार है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के जिस निर्णय का बार बार उल्लेख किया जाता है और हमारे विरोधी उसको अपने हिसाब से प्रयोग करते हैं, उसमें भी बहुत साफ देख लें कि 105 पेज के उस निर्णय में कहीं पर भी सर्वोच्च न्यायालय ने संसद के द्वारा दिल्ली के बारे में कानून बनाए जाने के विषय के ऊपर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं की।
इसके बाद भी न्यायालय के आदेश में पैरा 161 और 162 को कई बार उल्लेख किया जाता है, परंतु यदि पूरे संदर्भ में देखें तो पैरा 86, 95 और पैरा 164 एफ को पढ़ें तो वहां पर संसद के द्वारा दिल्ली के संदर्भ में किसी भी विषय के ऊपर कानून बनाने की शक्तियों का विधिवत अनुमोदन है, कहीं पर निगेशन नहीं है। और स्पष्टता के साथ इसकी आवश्यकता क्यों थी? ताकि शासकीय आदेश को एक विधायी शक्ति भी मिल सके, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को एक लेजिस्लेटिव पावर भी मिल सके। इसलिए उस अस्पष्टता को दूर करने के लिए, टू रिमूव एनी एन आयोटा ऑफ सस्पिशन, यह आवश्यक था। इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। अब कई बार लोग कहते हैं साहब अध्यादेश की आवश्यकता क्यों थी? वैसे तो माननीय गृह मंत्री जी ने भी इस विषय को लोकसभा में बताया था। अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कहा कि 19 तारीख को अध्यादेश क्यों आया। शायद उन्हें ध्यान हो कि दिल्ली सरकार में जैसे ही चंद दिनों में ताकत मिली तो सबसे पहले किन फाइलों के बारे में, सतर्कता के साथ सतर्कता विभाग की फाइलों के बारे में कार्रवाई की गई। मीडिया में प्राप्त समाचारों के अनुसार सतर्कता सचिव ने यह रिपोर्ट किया कि रात 9 बजे मंत्री के द्वारा उनको कॉल किया गया, सुबह 3 बजे तक वह कार्रवाई चलती रही, 76 से अधिक फाइलें मंगाई गईं और उन्होंने उपराज्यपाल महोदय को यह आशंका भी व्यक्त की कि उसमें कई ऐसी फाइलें थीं जो कि गोपनीय थीं और उसके अनुसार उन फाइलों में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ भी संभव है। अब मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि दिल्ली में बाढ़ आई तो दिल्ली फ्लड कंट्रोल अथॉरिटी की बैठक तो 2 साल से नहीं हुई, मगर विजिलेंस की फाइलें ओवरनाइट सर्च की गई। तो मेरे विचार से, और ये सर 16 और 17 मई की रात का था, तो मानी हुई बात है जब ऐसी परिस्थिति नजर आएगी तो उसके 1-2 दिन के अंदर अध्यादेश की आवश्यकता महसूस होगी। यहां मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं कि ब्यूरोक्रेसी पे नियंत्रण की बात आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा की जाती है, तो ये लोग तो अपनी एक पैरेलल ब्यूरोक्रेसी भी बना चुके हैं, क्योंकि अनेक प्रकार के समाचार पत्रों में आया है कि कई ऐसे लोग जो कि आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो सरकारी पदों पर भी विद्यमान हैं और सरकारी पदों पर रहते हुए सरकारी शक्तियों का भी उपयोग कर रहे हैं। वैसे लोग बहुत दावा करते हैं कि उन्होंने बहुत सारी चीजें फ्री दिया, कुछ 100 रुपए दिल्ली की जनता को कुछ मामलों में फ्री मिला और अपने लोगों को कई मौकों पे, कई जगहों पे, दर्जनों से ऐसे लोग हैं जिनको लाख लाख 1.5 लाख की तनख्वाहें मिली। और यदि आरोपों को देखा जाए तो करोड़ों रुपए के घोटालों के आरोप हैं। एक कहावत होती है, माले मुफ्त दिले बेरहम। तो मैं कहना चाहूंगा इनकी तो स्थिति यह है कि माले मुफ्त दिले बेरहम, दिल्ली पे सितम और करोड़ों हजम। अब एक और बात जो ब्यूरोक्रेसी के नियंत्रण की बात है, तो मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, इस दिल्ली प्रदेश में एकमात्र ऐसा प्रकरण हुआ जो पूरे देश के इतिहास में बहुत विचित्र था कि दिल्ली के मुख्य सचिव ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास के अंदर अपने साथ मैन हैंडलिंग का आरोप लगाया। मेरे विचार से पूरे भारत के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं होगा कि इस प्रकार की बात, इस प्रकार का आरोप लगा हो और वह भी मुख्यमंत्री की उपस्थिति में लगा हो। यह दर्शाता है कि ब्यूरोक्रेसी को नियंत्रण करने की जो छटपटाहट है उसमें वास्तविकता में वो फितरत क्या है। और मैं एक टेक्निकल पॉइंट कहना चाहता हूं, दिल्ली का कोई स्टेट कैडर नहीं है, जैसे राज्यों का कैडर होता है, तो राज्य का मुख्यमंत्री उस कैडर को नियंत्रित करता है। जो आईएएस और आईपीएस अधिकारी होते हुए यूनियन टेरिटरी कैडर में आते हैं, जब वो सारे राज्यों में, सारी केंद्र शासित राज्यों में उनका स्थानांतरण हो सकता है, तो मैं आपके माध्यम से विपक्ष से पूछना चाहता हूं कि यदि दिल्ली के एक अधिकारी का ट्रांसफर गोवा होना है और दिल्ली के सीएम की उस पर एब्सोल्यूट अथॉरिटी होगी तो यह कैसे संभव हो सकता है? इसलिए यह आवश्यक है कि इस विषय के ऊपर केंद्र सरकार की शक्तियां परिभाषित है। अब एक दूसरी बात भी है, दिल्ली में स्टेट कैडर भी नहीं है, यानी जैसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है और राज्य के कैडर होते हैं, तो यहां भी दानिश कैडर है, यानी दानिश कैडर में भी 3-4 यूनियन टेरिटरी आती हैं, दमन दीव और अन्य। अब दानिश कैडर के एक अधिकारी की जरूरत यदि अंडमान में या दमन दीव में भी होगी और दिल्ली का मुख्यमंत्री यह तय करेगा, तो क्या यह संवैधानिक दृष्टि से उचित है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी ने जो यह विषय रखा है वो पूरी तरीके से उचित है। अब दुरुपयोग की बात में मैं एक और बात कहना चाहता हूं, इनकी वास्तविक मंशा क्या थी। दिल्ली में एक जनरल फाइनेंशियल रूल 2019 है जो ये कहता है कि 10 करोड़ रुपए से अधिक का अगर किसी भी प्रकार का व्यय होगा तो वह मंत्री की शक्ति से बाहर होगा और वह एलजी के पास जाएगा। महोदय, इनके मुख्यमंत्री जी का जो मकान
या वजीर आला का अजीमुशान महल बनाने के लिए जो बिल बने साहब, वो पूरे उसके एक साथ नहीं बने। 10 करोड़ से कम के 8.5, 8, 7.5, 9 करोड़ रुपए के डिफरेंट बिल बने। और एक मद ऐसा है जिसमें कि मुख्यमंत्री कार्यालय के कर्मचारियों के लिए, महोदय जानते कितने का बिल बना? 9.99 करोड़, यानी 0.01 से कैसे बचा जा सकता है कि टेंडर न करना पड़े, मन मुताबिक खर्चे कर लिए जाएं। यह दर्शाता है कि नियमों के प्रति और ब्यूरोक्रेटिक नियमों के प्रति इनके मन में क्या आस्था है। और इतना ही नहीं, दिल्ली मेट्रो के लिए तो वृक्ष काटने की परमिशन वर्षों तक नहीं मिलती थी, मगर मुख्यमंत्री आवास के लिए वृक्ष काटने की परमिशन उनको मिल जाती थी। अब इसके साथ मैं एक और बात कहना चाहता हूं। एक नैतिकता, सैद्धांतिकता का सवाल उठाया जाता है, तो मैं कोट करना चाहता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने, जिनका वो आलीशान शीश महल बना हुआ है, उन्होंने 27 अक्टूबर 2013 को शीला दीक्षित जी के विषय में लिखा था ट्वीट, और उनको मैं कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी के घर में 10 एसी लगे हैं, मैंने तो सुना है कि बाथरूम में भी एसी लगे हैं, कौन भरता है इस एसी का बिल? और आगे वो कहते हैं, मेरा तो कलेजा कांप उठता है ये सोचकर कि दिल्ली की 40% जनता झुग्गियों में रहती है, तो कोई मुख्यमंत्री ऐसे आलीशान घर में कैसे रह सकता है। मैं कहना चाहता हूं, देखिए, केजरीवाल जी का कलेजा कापा हो या ना कापा हो, रूह कापी हो ना कापी हो, रूह है क्या है, किसकी रूह है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, मगर मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि शीला दीक्षित जी जहां भी होंगे, उनकी रूह को बहुत तकलीफ हो रही होगी कि जब उनके ऊपर ऐसी बातें करने वालों के साथ वो सारे लोग आज आकर खड़े हुए होंगे। वैसे महोदय, उनके घर में 10 एसी थे, यहां तो 15 टॉयलेट भी है। और इतना ही नहीं, एक एक करोड़ रुपए के पर्दे भी लगे हुए हैं, और 1 करोड़ रुपए के पर्दे का एस्टीमेट है। और इतना ही नहीं, अब सुनिए, उनके सामने एक दूसरी समस्या हो गई है कि अभी तक जो बातें चल रही थी, अब उनके सामने यह समस्या है कि उन चीजों को कैसे छुपाएं। देखिए, मैं इनके लिए कहना चाहूंगा कि अब उनकी फितरत जग जाहिर हो चुकी है। तो आज आम आदमी पार्टी की स्थिति यह है कि अब जो चेहरे से जाहिर है, छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। अब इस घर को सजाने का तसव्वुर हुआ बात की बात, अब तो मुश्किल है कि इस घर की हकीकत को छुपाएं कैसे। और यहां पर इसके बाद मैं कटाक्ष के बाद एक बात करुणा के साथ कहना चाहता हूं कि अन्ना हजारे के आंदोलन से निकली हुई वो पार्टी जो एक कमरे के मकान में रहते थे, और उससे निकली हुई पार्टियां सैकड़ों करोड़ के आलीशान मकान में रहती हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता और जिन जिन लोगों ने उस आंदोलन का समर्थन किया, उनके ऊपर भी एक आघात है। और साथ ही साथ ये एक बात का और भी संकेत देता है, फूड फॉर थॉट है देश के लोगों के लिए, कि एक्सपेरिमेंटल पॉलिटिक्स कई बार बड़े विचित्र परिणाम भी देती है। अब किसी नए नवेले प्रयोग को आजमाने का वक्त नहीं है, बल्कि आजमाए हुए मोदी जी के नेतृत्व को चमकाने का वक्त है। और बहुत से लोग ये कहते हैं, संवैधानिक नैतिकता का प्रश्न उठाते हैं कि अध्यादेश क्यों लाया गया। अध्यादेश के लाने का तात्कालिक कारण मैंने बता दिया, और वैसे मैं अपने विपक्ष के लोगों के सुलभ संज्ञान के लिए बता देना चाहता हूं कि इन लोगों ने कितनी बार अध्यादेश लाए हैं। नेहरू जी की सरकार में 70 बार, इंदिरा जी के जमाने में 77 बार, राजीव जी के समय में 35 बार, नरसिम्हा राव जी के समय में 77 बार, मनमोहन सिंह जी के समय में 61 बार, और जो यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट बनी थी भाजपा विरोध में, उसमें 1.5 साल में 77 बार। तो मुझे लगता है अध्यादेश का विषय उठाने से पहले इस अंक गणित को भी देख लेना चाहिए। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जो संविधान की दुहाई देते हैं उनके लिए, ये तो वो लोग हैं सभापति महोदय जिनकी संविधान में क्या आस्था है। इन्होंने संसद के द्वारा पारित सीए कानून के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया। यह संविधान का सम्मान है। और वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था। नागरिकता का विषय तो पूर्ण राज्य का भी विषय नहीं हो सकता, और तो उसके बावजूद दिल्ली सरकार ने पारित कर दिया। तो इसका अर्थ हुआ कि ये जिस प्रकार के कार्य करते हैं, उनका संविधान में कोई आस्था नहीं है। और अभिषेक मनु सिंघवी जी अभी कह रहे थे इलेक्टेड गवर्नमेंट, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, आफ्टर द 72nd एंड 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देयर आर 3 tier ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें एक म्युनिसिपल और जिला पंचायत, एक स्टेट और एक सेंटर। तो मान्यवर, ये तो राजीव गांधी जी लाए थे। तो आपके मन में ना ऊपर वाली इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए सम्मान है, ना नीचे वाली।
क्योंकि चंद महीने पहले तक तो ये एमसीडी से भी लड़ते थे और दिल्ली से भी लड़ते थे। तो जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की बात करें तो मेरे विचार से तीनों गवर्नमेंट की बात होनी चाहिए और केंद्र सरकार के संबंध में केंद्र से अधिक संवैधानिक शक्ति इलेक्टेड गवर्नमेंट में इस विषय के ऊपर किसी और की नहीं हो सकती। और मैं एक और बात वेदना के साथ कहना चाहूंगा, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने गणतंत्र दिवस की परेड पर भी संवैधानिकता की बात करते हैं, जिस दिन संविधान लागू हुआ उसकी पूर्व संध्या पे प्रदर्शन किया था। महोदय, मैं बताना चाहता हूं जिस समय इमरजेंसी लगी थी तब भी हमने कभी 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन राजनीति करने का प्रयास नहीं किया। तो वो लोग जब संवैधानिकता की दुहाई देते हैं तो बहुत आश्चर्य लगता है। और जब बार बार यह स्पष्ट किया जा चुका है कि फुल स्टेट नहीं है महोदय, मगर ये फुल स्टेट से भी संतुष्ट होने वाले नहीं, इन्हें तो सुपर स्टेट चाहिए। और फुल स्टेट से सुपर स्टेट की दौड़ में मुझे डर इस बात का है कि मेंटल स्टेट में भी ना पहुंच जाए कहीं, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं हो सकती है। और यह बात इसलिए कह सकते हैं कि 49 दिनों की वो सरकार, जब कांग्रेस पार्टी ने इनकी पालकी ढोकर सत्ता की दहलीज पहली बार पार कराई थी, उसके द्वारा अगर आप पारित इनका लोकपाल विधेयक देख लें तो उसमें संसद और सुप्रीम कोर्ट और जाने क्या क्या सारी चीजों को एक में मिला लिया गया था। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ये तो वो पार्टी देश का संविधान छोड़िए, अपनी पार्टी के संविधान में आस्था नहीं रखती। जब आम आदमी पार्टी बनी थी तो उसके संविधान में व्यवस्था थी कि उनका अध्यक्ष या संयोजक 3 वर्ष के लिए होगा और अधिकतम 2 बार होगा। मगर जो मीडिया में प्राप्त समाचारों के अनुसार 3 साल पहले उन्होंने वो संविधान में चेंज कर दिया, यानी अब जीवन पर्यंत या अपनी इच्छा के प्रसाद पर्यंत केजरीवाल जी इस विषय के ऊपर रह सकते हैं। तो मैंने इसलिए कहा ना, अपने संविधान के बारे में बात करिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इन्होंने अपनी कार्यकारिणी में ऐसे भी प्रस्ताव पारित किए हैं संविधान के संदर्भ में कि साहब इनके यहां परिवार के भी कितने लोग काम कर सकते हैं, जो मेरे विचार से बड़ी बड़ी परिवार वाली पार्टियों ने भी कभी अपने पार्टी के प्रस्तावों में इन प्रस्तावों को नहीं पारित किया होगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि बहुत आश्चर्य लगता था कि जब ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन के स्वरूप से आगे बढ़े थे, तब एक ही पंक्ति में बता देना चाहता हूं, क्योंकि जब आप इसकी बात करते तो क्या क्या नहीं था, कहां से बात शुरू हुई थी, हम राजनीति में नहीं आएंगे, फिर कसम खाते कांग्रेस का साथ नहीं लेंगे, फिर उसके बाद बंगला नहीं लेंगे, फिर शपथ खाते गाड़ी नहीं लेंगे, फिर शपथ खाते सुरक्षा नहीं लेंगे, और आज स्थिति यह है। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि जितनी बातें ये कहते थे वो सारी चीजें आवश्यक है, मगर यह दर्शाता है, क्योंकि मैं किसी की सुरक्षा के प्रति खिलवाड़ करने की बात नहीं करता, पंजाब जैसा राज्य संवेदनशील है, वहां के मुख्यमंत्री के पास सुरक्षा होनी चाहिए, परंतु मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि ये इस बात में जो कहना चाहते हैं कि इन्होंने कितना बदलाव किया है मान्यवर, इसलिए कभी कभी इनके 10 वर्ष के अंदर चरित्र में इतना बदलाव, ये कहते सबसे जल्दी सत्ता में आए। महोदय, मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ, हम 1951 बने, हमने 72 साल में कभी कांग्रेस से समझौता नहीं किया, इन्होंने 72 दिन में समझौता किया, तब ये सत्ता में आए। और इसलिए आज दिल्ली की जनता अपने को ठगा हुआ महसूस करती है, और शायद दिल्ली के लोग ये कह रहे होंगे कि मैं समझता था वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते, जिनको पत्थर से हमने बनाया सनम वो खुदा हो गए देखते देखते। और मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं संक्षेप में, मेरे विचार से इनको अध्यादेश पढ़ना चाहिए, संविधान पढ़ना चाहिए और दिल्ली का अधिनियम पढ़ना चाहिए, क्योंकि अपने वो कहते हैं सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री। तो मैं ये भी बताना चाहता हूं कि ये सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री जो अपने को सबसे हाई क्वालिफिकेशन का नाज रखते हैं, 2-3 उदाहरण उनके ही बता देना चाहता हूं। जिस समय कोविड की वेव चरम के ऊपर थी, तब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कोविड वैक्सीन का फार्मूला सारी कंपनियों को क्यों नहीं दे दिया जाता। मान्यवर, कोविड वैक्सीन तो छोड़िए, पैरासिटामोल जैसी जो दवा भी अमेरिका ने उस समय हमसे मंगाई थी। अब कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति ये कह सकता है कि वो चूरन की तरह फार्मूला सबको दे दिया जाए। तो कभी कहते हैं कि यूट्यूब के ऊपर फिल्म क्यों नहीं लाद दी जाती है, अरे भाई वो सरकार का अधिकार का क्षेत्र नहीं है। और फिर इतना ही नहीं, सिंगापुर में इनको बुलाया, इनविटेशन आता मेयर्स कॉन्फ्रेंस का, तो मुख्यमंत्री होते हुए जाना चाहते हैं। तो मेरे विचार से कम इनको थोड़ा पढ़ना लिखना चाहिए। और एक पढ़ने लिखने पे एक तथ्य मैं जरूर बताना चाहूंगा, जब न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार में इनकी तारीफ निकली थी तो इनके मुंह से निकल गया था कि दुनिया का सबसे बड़ा अखबार, और उसमें इतनी तारीफ निकलवाना आसान नहीं है, वैसे निकलवाना शब्द निकल गया था। मगर मैं पढ़े लिखे मुख्यमंत्री को यह भी बताना चाहता हूं महोदय
कि न्यूयॉर्क टाइम्स दुनिया का सबसे बड़ा अखबार नहीं है, वो है यमुनी शिंबुन जापान का। अमेरिका का भी सबसे बड़ा अखबार वो नहीं है, वो यूएसए टुडे। और इतना ये समझिए, इतना ही नहीं, भारत का टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक भास्कर, और वो भी उनसे अधिक है। तो मैं सिर्फ ये बताता हूं, अरे भाई जिस अखबार का नाम लेते हैं कम से कम उनको तो पढ़ लेना चाहिए था। मैं आपको अधिक समय न लेते हुए मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं महोदय कि इनको ना पढ़ाई से मतलब है, इन्हें ना पढ़ाई से मतलब है, न लिखाई से मतलब है, इन्हें तो बस कमाई से मतलब है, और वो भी ऊपर वाली कमाई से। और अंत में मैं कहना चाहता हूं सर, अंत में एक लाइन और कहना चाहता हूं कि आज सब लोग मिले, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिले, भारत की सबसे पुरानी पार्टी, पुरानी धुरानी पार्टी, नई पार्टी, नई नवेली पार्टी, अजब अलबेली पार्टी, सब मिलकर एक हो गए। मगर प्राप्त क्या किया? दोनों ने सिद्धांतों से समझौता किया, और कांग्रेस ने भी इतना सयाना दांव चला कि इन्होंने अगर उनका हाथ पकड़ के दिल्ली अध्यादेश पर समर्थन लिया हो तो अविश्वास प्रस्ताव ले आए, लीड उनको मिल गई। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं अंत में कि इन लोगों को आखिर में क्या प्राप्त हुआ, ये पंक्ति कह के समाप्त करता हूं कि इनको विधेयक भी नहीं मिला और सम्मान भी नहीं मिला, यानी इज्जत भी गई, बात भी नहीं मिली। तो एक पंक्ति कहता हूं, न तुम ही मिले, आप लोगों के लिए लागू है, न तुम ही मिले न मयस्सर तुम्हारी दीद हुई, दीद मतलब साइट, न तुम ही मिले न मयस्सर तुम्हारी दीद हुई, तुम ही कहो ये मुहर्रम हुई कि ईद हुई। सुखेंदु शेखर रे, श्री सुखेंदु शेखर। त्रिवेदी ने बड़े जोश के साथ और बहुत शेर शायरी के साथ उन्होंने बात की। त्रिवेदी ने शेर शायरी के साथ बहुत लंबी तकरीर की। अगर उसको उत्तर हमारे पास चतुर्वेदी है, अगर आप त्रिवेदी है तो हमारे पास चतुर्वेदी है। माननीय प्रतिपक्ष के नेताजी, नहीं, डॉक्टर अभिषेक सिंघवी ने कवि का काम ज्यादा किया, वकील का कम किया। कितना कवि का काम आपने किया। श्री सुखेंदु शेखर रे, 9 minutes. Thank you. I am not going to make a political speech because the matter relates to a very important bill relating to National Capital Territory of Delhi. Sir, there is no sound from this microphone. I cannot shout. No volume. No volume here. I can hear. But I cannot shout, sir. I cannot hear. There is no feedback. No feedback to my ear. Yes, some problems, sir. Go ahead. Some problem. As I have stated, that I am not going to make any political statement, but my submission shall be confined within the parameters of this bill. On 19th of May this year, the Honorable President of India promulgated the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Ordinance 2023, which negates a constitution bench judgment of the Supreme Court dated 11th May 2023 that brought services under GNCTD. There could be some symbolism in the ordinance being promulgated in the middle of the night, as already stated by some of my colleagues, just a few hours after the Supreme Court closed for summer vacation. But I am not on that. Meanwhile, the ordinance has been challenged in the Supreme Court, and the matter has since referred to a constitution bench. During the pendency of the matter before a constitution bench of the highest court of the land, the government has introduced this present bill to repeal the ordinance and for further amending the GNCT Act 1991. I wondered as to whether heaven would have fallen had the government waited for the outcome of the constitution bench where the ordinance is still pending.
What is the urgency involved in the matter? What is the urgency? There is no whisper about the urgency in the bill or the statement which have been received just now after the introduction of the bill, that the aforesaid judgment, that is judgment dated 11th of May, posed certain challenges in the efficient administration of the government of NCT of Delhi, which needed to be addressed through appropriate legal interventions. According to me, this is a stigma on the highest forum of our judiciary, which must be deprecated by all conscious citizens of this country. Sir, in the year 2021, in the matter of Madras Bar Association, the Supreme Court held inter alia, and I quote one line, "A legislation can be declared as unconstitutional if it is in violation of the principle of separation of powers, the rule of law, and Article 14 of the Constitution, that is arbitrariness." Therefore, once there is such a judgment, which was delivered in 2001, government ought to have abide by that judgment of Supreme Court, which is otherwise a requirement under the Constitution. I am coming to that later on. Sir, the question is whether the Legislative Assembly of Delhi has powers over all matters in list 2, except the matters in entries 1, 2, and 18, which is public order, police, and land. In apparent defiance of the 11th May judgment, this bill seeks to amend the GNCT Act for abridgment of the powers conferred upon the GNCT legislation by the Constitution, because the entry number 41 is sought to be taken away, is sought to be inserted through this bill. So 3 will be 4, rightly pointed out by our senior counsel, Mr. Abhishek Manu Singh Viji. Now, sir, when a constitutional bench comprising 5 judges of Supreme Court declares or interprets Article 239 AA3A of the Constitution, the same is binding upon all courts and authorities in India in terms of Article 141 and 144 respectively. Neither Article 239 AA3A nor Articles 141 and 144 can be negated without a constitutional amendment. I repeat, without a constitutional amendment, this cannot be done. And if at all the government brings, subsequently will have to bring, if they wish, because this legislation will be declared null and void. As a student of law, I understand. It will be done. But if the government at all in future brings a constitutional amendment bill, that will also hit by the principle of separation of powers, and federalism, which are the basic structures of the Constitution that was held by the Supreme Court right from the Keshavananda Bharati case till Minerva Mill case. Sir, this bill this bill seeks to render the GNCTD Assembly, or for that matter the Delhi government, virtually toothless and ineffective insofar as the services and service commission are concerned. Even a constitutional bill on this score shall be unconstitutional ab initio, as it will negate federalism and separation of powers, already stated by me. Sir, now let me have a look at the bill once. Possibly that will be the final, because 7 minutes already elapsed. Come to part 4A. It says about provisions relating to the maintenance of democratic and administrative balance in the governance of National Capital Territory of Delhi. What a brilliant drafting. To maintain a balance, the original act was
came into being in 1991. We are in 2023. So for the last 33 years, there was no balance. There was no balance. That is why, all on a sudden, the Kumbhakarna has risen from the deep sleep to maintain a balance. Interestingly, the authority has been proposed to be created. Which authority? Already stated by other members, the Chief Minister. Chief Minister will be a, what should I say? What should I say? Without any authority. He doesn't have any authority. The bureaucrat will prevail upon him. Sir, in democracy, will of the people is supreme. Vox populi, vox dei. সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই. Will of the people. But here, the will of the people, which has been reflected through election, the duly elected constitution elected government, his chief minister has no power. The bureaucrat will overrule the recommendations of the chief minister. This is a draconian bill. This is against all spirit of the constitution, and every citizen of this country should oppose this bill in the manner, not only inside parliament, even outside parliament, voice is to be raised. Sir, finally, with your kind permission, I would like to quote from judgment online of former Chief Justice Y.V. Chandrachud, the father of the present Honorable Chief Justice of India. Quote, Parliament cannot, under Article 368, expand its amending power so as to acquire for itself the right to repeal or abrogate the Constitution or to destroy its basic and essential features. Here is a case where the basic features are being destroyed. And sir, according to me, according to my party, All India Trinamool Congress, this government seeks to insert entry 41 of the list 2 into Article 239A3A, thereby expanding the scope of accepted matters, so that the bill virtually stands against the heaven of freedom into which Rabindranath Tagore wanted his country to awake, as the bill reflects the abyss of unrestricted power to ensure emergence of a banana republic. Thank you, sir. Shri Tiruchi Shiva, 14 minutes. Thank you, Mr. Chairman, sir. Sir, I stand to oppose this bill very strongly, for it infringes upon the basic structure of doctrine by crushing the federalism, which is the soul of Indian democracy. Sir, this attempt of this government is yet another a strike on federalism. It is unwarranted, untenable, it is undemocratic, unjustifiable, unfederal, and unconstitutional. Sir, why I am saying all these things? Unwarranted. Sir, after 1991, when the Delhi was granted special status, BJP came to power. Mr. Madanlal Khurana and later Sahib Singh Verma, who were the chief ministers, they insisted for full statehood for Delhi. And later, sir, in 2003, August of 2003, the NDA one government introduced a bill insisting for full statehood for Delhi. So when they are ruling, they want full statehood for Delhi. Then what necessity for this ordinance or this bill, sir? After 2015, Aam Aadmi won the election with a significant margin.
Immediately after that, the union government issued a notification that services will come under the control of the union government. And that sparked a legal battle, sir, which lasted for 8 years. And recently, the Supreme Court in 2018 and 2023 constitutional bench has given a unanimous judgment in favor of the Delhi government that they have got every purpose. Now this bill is attempting to overturn the Supreme Court judgment and override the powers of the state government. Sir, we should just look at it in this manner, sir. So whenever they are in double standard, when they are in power, they want something. It is intolerance to say very shortly, if an opposition party is ruling, they will be disturbed by the governors. If it is a union territory, the lieutenant governor will take all the powers and will not allow the state government to function. So in this situation, where is democracy? Sir, our constitution, as you know very well, sir, has given a structure of federalism, which gives the very importance to the regional aspirations can be represented and realized by state governments, and which cannot be done by a centralized union government. Sir, it has also established a mechanism of triple chain accountability. The people hold the legislators accountable, the legislature holds the government accountable, and the government holds the officers accountable. But now, the officers are not under the control of the government of union territory. So what's the use of being there? So this triple chain accountability is broken by way of this attempt. This not only I say here, sir, the Supreme Court has also emphasized very strongly. It should not be severed on any account. Sir, now coming detail into the bill. Why we are opposing? What are the contentious issues? What are the reservations we have? All others have spoken, sir, but we have to enlighten it. Number one, this bill attempts to establish a National Capital Civil Services Authority. As everyone said, it will consist of 3 members under the chairmanship of the Chief Minister and 2 officers, Home Secretary and Chief Secretary. Who are they? Appointed by the Union government. Obviously, one can understand what will be the outcome. The quorum is 2 and the majority will be the decision. Sir, I have moved an amendment, which even it may be passed. I think with hope. If at all it is passed, even it won't be of use, sir. Because even if the authority with a majority gives a suggestion to the lieutenant governor, he can reject it. So ultimately it goes there. The authority becomes redundant and the chief ministership becomes lesser than a rubber stamp. We are very sorry to say these words. A chief minister elected by the government has to fulfill the obligations by the mandate has been given to him. But whereas he is not able to have control. So Delhi has been the nucleus of power from Mughals to British. Can anyone say any ruler has ruled without control on their officers, whether he or she? But now this bill paves the way. Sir, where we are heading towards? The government which is accountable to the people, to the legislature, and the government which can hold the officers accountable, now they don't have any control over the officers. Number 2, sir, the Council of Ministers, the Cabinet. Earlier, sir, the notes which are prepared by the ministers. And it will be taken over there. And after the decision, it will be forwarded to the Lieutenant Governor. It is vetted by the Law Department. Now that the Secretary will overlook the minister, and overall, the Cabinet, which is the Council of Ministers, if they take a decision, the Chief Secretary will come and say, it doesn't come under law or under the rules of procedure, and he will take it to the Lieutenant Governor who can alter it or reject it. So first, the Chief Ministership became redundant. Now the Council of Ministers become redundant. Number 3, sir. Any minister, if he takes any decision, the Secretary is the supreme. If the Secretary doesn't agree with the decision of the minister concerned, without the consent of the minister, he can take it directly to the Chief Secretary or to the Lieutenant Governor. So the ministership also becomes redundant. Number 4, sir. Delhi is also like other states run by
some 50 around statutory authorities, corporations, and commissions. This include industry, tourism, everything. It comes under even transport, water, sewerage, women rights, child rights, and all. All these positions, the chairpersons and the members were earlier nominated by the government, by the lieutenant governor on the advice of the government. But now, sir, hereafter, these positions will be appointed only by the lieutenant governor. The government has to sit with folded hands. Sir, one by one, just though the authority is established, the authority has no say, and even in the authority, the chief minister has no say. Number two, the council of ministers, the cabinet becomes redundant, the minister becomes redundant. Number four, sir, all the commissions, all the corporations, all the statutory authorities will be appointed by the lieutenant governor, and then proroguing and summoning also comes to the power of the lieutenant governor. Earlier, sir, the council of ministers will decide a date and they will represent to the lieutenant governor and he will summon. Now that lieutenant governor can do. So the government cannot, if at all an urgent issue has to be resolved, if the assembly has to be convened, the chief minister or the council of ministers has no power. Sir, kindly tell us. We are not just accusing the government or pointing fingers, what you are doing is wrong, but kindly explain to us why all these things happen. A government which has been elected by the people, they have to cater to the needs of the people. They only know the local people's aspirations. That's why we are pleading for state autonomy. When the voice for decentralization is going up and up, this government is traveling on the opposite direction. Powers are centralized in the union government again and again. What will happen? It will get broken. Sir, India, which is known for federalism, sir, everything is under threat now. Secularism is under threat now. Especially, sir, we are very much concerned that this bill again strikes at the very root of federalism. Sir, let me quote Dr. Baba Saheb Ambedkar. Ambedkar, in November 4, 1948, this bill disregards the constitutional morality. That's what I'm trying to drive at. Dr. Ambedkar on November 4th, 1948 in the Constituent Assembly, quote, while everybody recognizes the diffusion of constitutional morality for the peaceful working of a democratic constitution, there are two things interconnected with it, which are not, unfortunately, generally recognized. One is that the form of administration has a connection with the form of the Constitution. The other is that it is perfectly possible to pervert the Constitution. Sir, underscore. The other is that it is perfectly possible to pervert the Constitution without changing its form by merely changing the form of administration and to make it inconsistent and opposed to the spirit of the Constitution. Sir, it is not a statement by Tirthi Siva. It is Dr. Ambedkar in the Constituent Assembly. And emphasizing that, the Supreme Court in its judgment in 2018 refers to the Constitution in these words, quote, constitutional morality is that fulcrum which acts as an essential check upon the high functionaries and citizens alike, as experience has shown that unbridled power without any checks and balances would result in a despotic and tyrannical situation which is antithetical to the very idea of democracy. Sir, what is going on now? Unbridled powers without any checks. Everything is taken over. Sir, we are told now and then, again and again, many a time, that many of the acts that has been enacted during this regime, sir, are transgressing into the powers of the state governments. It is taking away the powers of the state governments. All are heaped with the union government. So this is what the Supreme Court has also said, unbridled power with no checks and balances. Same thing, Dr. Ambedkar has also told, constitutional morality, this disregards constitutional morality.
Sir, I earnestly appeal to my fellow colleagues of some political parties who may support the government's decision. My earnest appeal, as Mr. Singhvi told, sir, we are living in an area where there are 100 huts, all thatched roofs. If the last house is burning, the person sleeping in the first house will not sleep. He will go, run and put out the fire with the fire brigade. It is not only to help him, sir, but to safeguard his own, sir. If it is not put out, that fire will slowly come and at last it will affect them. So it has to be thought over. Sir, all these years, we have preserved our independence. We have preserved our democracy. Sir, often you used to say, sir, very proudly, India, the largest democracy in the world. Yes, sir. The largest democracy now is in peril. Why so many charges against the state governments? No state government is able to function on its own. It's not able to enact a law. If something is passed in an assembly, it is not endorsed by the governor. So they are not able to serve the people's needs. Only they know what the people need. That's why the state governments have been formed. But now that either the union government encourages or through the governor, it is trying to obstruct. Sir, all these things have to be kept in mind. Again, I say, all the reservations and contentions we have raised are not with a partisan mood, sir, but it has to be justified. Why all these things have been done? Why all the powers have been taken from a state government? Why the chief ministership has been reduced to the level of, sorry to say the word, rubber stamp, and more or less, everything is redundant, sir. What is the big idea of getting along? Sir, let me conclude, sir. I've already told them once, now that, not in any other manner. In the democratic process, one day they will be out of power. And every day they will be lamenting and regretting for all those laws they have enacted. It is not far behind, sir. 2024, the India Alliance will win. We will be there. And, sir, we will restore Delhi its autonomy. Thank you very much. Let me go on. Don't be too quick. It is not too quick for me. Shri Raghav Chadda, 14 minutes. 1-4. सर, आज मैं सिर्फ 2 करोड़ दिल्ली वासियों की ओर से नहीं, बल्कि 135 करोड़ भारत वासियों की ओर से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सर, इससे ज्यादा असंवैधानिक, गैर कानूनी कागज का टुकड़ा एक बिल के माध्यम से शायद ही आज से पहले कभी संसद भवन के भीतर लाया गया होगा। और अपना वक्तव्य शुरू करने से पहले मैं महाभारत के एक अंश का वर्णन करना चाहूंगा, जिसे रामधारी सिंह दिनकर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता में लिखकर बताया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण एक शांति दूत बनके पांडवों की ओर से हस्तिनापुर जाते हैं शांति का प्रस्ताव लेकर। कवि लिखते हैं, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। भगवान कहते हैं, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी ना उड़ाएंगे। पर दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो असाध्य था उसे साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता। सर, इसमें दिल्ली बिल का सार है। सर, हम न्याय की गुहार लगाने आपके सामने आए हैं, अपने हक मांगने आए हैं, अपने हक से ज्यादा मांगने नहीं आए। सर, मैं अपने वक्तव्य को 3 भाग में बांटता हूं। पहला, कि ये बिल कैसे एक राजनीतिक धोखा है, पॉलिटिकल फ्रॉड है। दूसरा, ये कैसे एक संवैधानिक पाप है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिन है। और तीसरा, कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉकजैम यानी कि प्रशासनिक गतिरोध दिल्ली में कैसे पैदा कर देता है। सर, पहला, राजनीतिक धोखा। ये कहानी है सर 1977 से लेकर 2015 की। लगभग 40 साल का लंबा संघर्ष भारतीय जनता पार्टी ने
दिल्ली में पूर्ण राज्य का दर्जा स्थापित करने के लिए किया। 1977 में जब थर्ड मेट्रोपॉलिटन काउंसिल दिल्ली में था, उसमें जनता पार्टी की सरकार थी। उन्होंने मता पास कर कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा बनाएंगे। लगातार पूर्ण राज्य की दर्जे की मांग करते 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 ये 1989 का लोकसभा का मैनिफेस्टो में बीजेपी का लाया हूं। 1989 के मैनिफेस्टो में पेज नंबर 361 पे पॉइंट नंबर 10 पे ये कहते हैं, ग्रांट स्टेटहुड टू यूटी ऑफ दिल्ली। यानी कि 1989 से लेकर लगातार ये लोग दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग करते रहे। यहां तक कि जब 1991 में कांग्रेस की सरकार ने दिल्ली में विधानसभा का गठन किया, उससे भी ना पर्याप्त मानते हुए लाल कृष्ण आडवाणी जी, मदन लाल खुराना जी सबने बयान दर्ज कराए कि यह भी दिल्ली के साथ न्याय नहीं है, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और हम इसके लिए आंदोलन चलाएंगे। और लगातार इन लोगों ने संघर्ष किया, आंदोलन किया। सर 1998, 1999 में फिर अपने मैनिफेस्टो में बीजेपी ने, ये 1999 का मैनिफेस्टो है, ये जारी कर कहा कि हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। पेज नंबर 132 पॉइंट नंबर 31, वी विल गिव फुल स्टेटहुड टू दिल्ली। सर इन लोगों ने बड़ा आंदोलन चलाया, संघर्ष किया, सड़कों पे लाठियां खाई, न जाने क्या क्या किया दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए। और अंततः वो दिन आया जिस दिन वाजपेयी सरकार और वाजपेयी सरकार के उप प्रधानमंत्री आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी इस सदन के भीतर एक बिल लाए, द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2003, जो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देता है। ये बिल आडवाणी जी इस सदन के भीतर लाए और कहा कि दिल्ली को अधिकार देने की जरूरत है, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा भाजपा दिलाएगी। यहां भी बात खत्म नहीं होती सर। इसके बाद 2013 के अपने मैनिफेस्टो में बीजेपी ने कहा हम पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। इनकी जून 2013 में नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई, उसमें मता पास कर कहा हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। यहां तक कि इनके सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन ने बयान दिया कि जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। ये इन सब ने सर लगातार बातें कही और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग लगातार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वालों के सामने रखती रही। सर ये बिल सिर्फ संविधान का और लोकतंत्र का अपमान नहीं है, ये बिल लाल कृष्ण आडवाणी जी का, अटल बिहारी वाजपेयी जी का, मदन लाल खुराना जी का, सुषमा स्वराज जी का, अरुण जेटली जी का, सबका अपमान करने का और उनके 40 साल के संघर्ष को मिट्टी में मिलाने का काम करता है। सर मैं माननीय गृह मंत्री जी का बयान लोकसभा में सुन रहा था। उन्होंने कहा कि नेहरू जी ने, पंडित नेहरू ने यह बात रखी थी कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं, नेहरूवादी मत बनिए, आडवाणीवादी बनिए, वाजपेयीवादी बनिए और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का आज आपके पास ऐतिहासिक मौका है। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए। सर इस बिल को लाने का असल कारण क्या है? यह बिल क्यों लाया गया है? पिछले 25 साल में दिल्ली में 6 बार विधानसभा के चुनाव हुए। 6 के 6 चुनाव भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारी। यहां तक कि 2015 और 20 में आजाद भारत के इतिहास की सबसे बड़े जनादेश की सरकार अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बनाई। क्योंकि ये पिछले 25 साल चुनाव नहीं जीत पाए और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के आने के बाद ये जानते हैं कि अगले 25 साल भी ये लोग चुनाव नहीं जीत पाएंगे, तो सरकार को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। ना रहेगी सरकार और ना रहेगा चुनावों का महत्व, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। लेकिन मैं आज इस मंच से भाजपा से अनुरोध करूंगा कि कम से कम लाल कृष्ण आडवाणी जी को न्याय दीजिए, कम से कम उनकी इच्छा पूरी करिए, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए। सर मेरा दूसरा भाग कि कैसे ये बिल एक संवैधानिक पाप है। सर पहली चीज, ये अब्यूज ऑफ ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स है, आर्टिकल 123 जो संविधान का देता है। संविधान ये कहता है, और वाईवी चंद्रचूड़ साहब का AK रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक बड़ा महत्वपूर्ण लैंडमार्क जजमेंट है, जिसने कहा कि ऑर्डिनेंसेस सिर्फ आपातकालीन और विषम परिस्थितियों में लाए जाएंगे। ऐसी कौन सी आपातकालीन और विषम परिस्थितियां आ गई कि आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 8 दिन के भीतर बदलना पड़ गया? दूसरा देखिए सर, दूसरा सुप्रीम कोर्ट की दूसरा बिंदु,
ये सुप्रीम कोर्ट का अपमान है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 8 दिन के भीतर 5 जजों के संवैधानिक पीठ के सर्वसम्मति के फैसले को बदल के आज भारतीय जनता पार्टी ने एक मैसेज दिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट को भी चैलेंज करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी नहीं मानते, आपको जो ऑर्डर जारी करना है करो, हम चंद दिनों के अंदर ऑर्डिनेंस लाकर उस फैसले को बदल देंगे। दे हैव चैलेंज द मैजेस्टी ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सर। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आजकल जो ऑर्डिनेंस लाने की जो एक फेटिश इस सरकार ने देखी, चाहे वो लैंड एक्विजिशन बिल हो, चाहे वो फार्म बिल हो, चाहे ईडी के डायरेक्टर का एक्सटेंशन हो, जो ये सारी चीजें ऑर्डिनेंसेस के माध्यम से इन्होंने करी थी, इस बिल का हश्र भी वही होगा जो सारे पुराने बिलों का हुआ था। सर, थर्ड बिंदु कि कैसे ये बिल संघीय ढांचे को एरोड करता है। हमारा भारत का संविधान और सुप्रीम कोर्ट का 2023 का 2018 का संवैधानिक पीठ का फैसला कहता है कि दिल्ली के पास एक यूनिक फेडरल आइडेंटिटी है, यूनिक कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी है, और भारत का संविधान जो हमें संघीय ढांचा देता है, जो शक्तियां देता है, उन शक्तियों को एनक्रोच करने का काम ये सरकार करती है, हमसे अफसरशाही और तमाम शक्तियां छीनकर। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का वो एक वाक्य पढ़ के सुनाना चाहूंगा। द मेजॉरिटी इन द 2018 कॉन्स्टिट्यूशनल जज बेंच हेल्ड that while the NCT of Delhi could not be accorded with the status of a state, the concept of federalism is applicable to Delhi. हम पूर्ण राज्य नहीं है, लेकिन फिर भी राज्य का दर्जा एक संघीय ढांचे के परिप्रेक्ष्य में दिल्ली को मिलता है। उसके बाद सर, इन लोगों ने तो कमाल ही कर दिया। आज बिना संवैधानिक संशोधन लाए संविधान को बदल दिया, मात्र एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से, जो आज तक शायद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। सर, इसके बाद ये बिल पार्लियामेंट्री अंडरमाइन करता है प्रिंसिपल्स ऑफ कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी को। भारत का संविधान कहता है सर कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मिलके लेजिस्लेचर के प्रति जवाबदेही होंगे। ये प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी है। इसमें से परमानेंट एग्जीक्यूटिव यानी कि अफसरशाही को छीनकर ये पूरी तरीके से कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी का प्रिंसिपल, जिसपे सरकारें चलती हैं देश में, उसे ध्वस्त करता है। और आखिरी बिंदु, संवैधानिक अपराध का, ये ट्रिपल चेन ऑफ अथॉरिटी को तार तार करता है सर। ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी ये होती है कि अफसरशाही की जवाबदेही मंत्री को, मंत्री की जवाबदेही लेजिस्लेचर को, और लेजिस्लेचर की जवाबदेही जनता को। इसमें से अगर आप अफसरशाही हटा देते हो तो फिर जवाबदेही की जो ये ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी है ध्वस्त हो जाती है। तो ये काम करके संवैधानिक अपराध एक प्रकार से सरकार ने किया है। सर, मेरा आखिरी भाग, ये कैसे एक एडमिनिस्ट्रेटिव हाराकिरी, एक एडमिनिस्ट्रेटिव गतिरोध पैदा करता है। ये कहता है सिर्फ उपराज्यपाल ही ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे एक समिति के माध्यम से, यानी कि अफसर अब मुख्यमंत्री की नहीं सुनेगा, मंत्रियों की नहीं सुनेगा। अगर अब दिल्ली में किसी के घर में बिजली नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा, किसी के बच्चे का स्कूल में दाखिला नहीं हो रहा, तो वो उपराज्यपाल के पास जाएगा, अपने मंत्री मुख्यमंत्री के पास नहीं जाएगा। क्या लोग जानते हैं उपराज्यपाल कहां रहता है? उपराज्यपाल कौन सी विधानसभा से चुनाव लड़ा, उपराज्यपाल ने कौन सा चुनाव जीता? लेकिन सारी शक्तियां एक चुनी हुई सरकार से निकालकर उपराज्यपाल को देता है। ये आगे कहता है सर ये बिल कि हम एलजी को सोल डिस्क्रिशन देते हैं, स्वयं के विवेक से फैसले लेने की तमाम शक्तियां। आज तक उपराज्यपाल और गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से बाध्य थे, लेकिन यह बिल उपराज्यपाल को सुपरसीडिंग पावर देता है। आगे सर, यह बिल जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्हें एक जुडिशियल अथॉरिटी बना देता है। यह कहता है अफसरशाही तय करेगी कि मंत्री का फैसला सही है कि मंत्री का फैसला गलत है, और अगर अफसर को मंत्री का कोई फैसला पसंद नहीं आया तो अफसर मंत्री का फैसला लागू करने से मना कर सकते हैं। और सर, यह बिल अथॉरिटी, कमीशंस और कॉरपोरेशंस बनाने की, तमाम गठन करने की, नियुक्ति करने की शक्तियां सारी की सारी केंद्र सरकार को दे देता है, यानी कि सरकार की चाबी एक प्रकार से केंद्र सरकार को हाथ में पकड़ा देता है। सर, माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि आम आदमी पार्टी एक सुपारी सी जितनी पार्टी है, एक सुपारी जितनी छोटी सी पार्टी है। सर, ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जो आजाद भारत के इतिहास का फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉलिटिकल स्टार्टअप कहलाती है। ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जिसने 3 बार भाजपा को दिल्ली में हराया और 2 बार 2015 और 20 में आजाद भारत के इतिहास की सबसे बड़ी जनादेश की सरकार बनाई। ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जिसने पंजाब में भाजपा को लगभग शून्य पर लाकर खड़ा कर दिया। ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जो 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बनी। ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जिसके 161 विधायक और 11 सांसद है। और ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जिसका काम देखने के लिए फर्स्ट लेडी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड जनरल के पूर्व प्रमुख बान की मून आते हैं। सर, मैं आज अपने साथी जो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सरकार चलाते हैं उन्हें कहना चाहूंगा,
आपकी जरूर कुछ मजबूरियां रही होंगी जिसके चलते आपने ये फैसला लिया इस सरकार के इस बिल का समर्थन करने में। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि आग जब लगेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। राहत इंदौरी साहब का एक बड़ा महत्वपूर्ण शेर है, अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। लेकिन जब आपके घर में आग लगेगी, आम आदमी पार्टी आपके साथ खड़ी होगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और सर, मैंने अपनी बात शुरू करी थी महाभारत के एक अंश से, मैं समाप्त भी महाभारत के एक अंश से करूंगा सर। बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में जब युद्ध प्रारंभ होने वाला था, तो युधिष्ठिर ने शंखनाद करने से पहले एक घोषणा करी और कहा कि यह धर्म की लड़ाई है। मेरी सेना में खड़े मेरे पीछे जितने योद्धा हैं, अगर उन्हें लगता है कि धर्म मेरे साथ नहीं कौरवों के साथ है, तो मेरी सेना छोड़कर सामने वाली मेरी दुश्मन की सेना में जाकर खड़े हो जाएं, उनकी ओर से युद्ध करें। और अगर कौरव सेना में कोई योद्धा है जिसे लगता है कि धर्म युधिष्ठिर के साथ है, पांडवों के साथ है, तो आप कौरवों की सेना छोड़कर मेरी सेना में आइए, मैं बाहें फैलाकर आपका स्वागत करूंगा। उस समय कौरवों का एक भाई युयुत्सु कौरव सेना छोड़कर पांडवों की ओर आया और पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा। मैं उसी बात का जिक्र करते हुए आज इस सदन में बैठे तमाम सांसदों को कहना चाहता हूं, राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, हम लोग काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, जहां ज्यादा जिम्मेदारी बनती है राज्यों के हितों की, अधिकारों की रक्षा करने की। मैं मांग करता हूं, आज आप लोग पार्टी लाइन से ऊपर उठकर, विचारधारा से ऊपर उठकर संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए इस बिल को हराइए। आज ये इतना असंवैधानिक और गैर कानूनी बिल अगर ये सफल हो गया, तो हो सकता है आज के बाद आने वाले समय में ये लोग देश में चुनाव ही ना कराए, चुनावी प्रक्रिया को खत्म करने से। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सस्मित पात्रा, Thank you. 12 minutes. Honorable Chairman, sir, I rise to speak on behalf of the Biju Janata Dal. Sir, speaking on this bill in the Lok Sabha, our party's senior member of parliament and leader of the BJP parliamentary party in Lok Sabha, Shri Pinaki Mishra ji, has already made our stand very clear and has made it very eloquently and succinctly expressed that the Biju Janata Dal's equidistant stand from the BJP and the Congress and the reasons for the same, and the fact that BJP is our principal opposition party. I reiterate and place on record that we are equidistant from the BJP and the Congress, and our principal opposition party in Odisha is the BJP. Our stand today does not change anything in that regard. Sir, BJP is in favor of this bill because it supports the constitutional standpoint of this bill and the parliament's power to enact legislations and the parliament's legislative competence to such matters. Sir, I need your protection, sir. You can imagine the kind of ruckus being made. I should be heard. 4.5 crore people in Odisha want to hear, whether people here want to hear or not. Honorable members, please keep calm. Thank you, sir. You see, Sir, in July 4th, 2018, the Supreme Court judgment in its civil appeal has very clearly said on para 277, और ये मैं सुप्रीम कोर्ट के अध्यादेश और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से रेफर कर रहा हूं, 2018 जुलाई 4, क्या कहती है सुप्रीम कोर्ट? Supreme Court in the matter of civil appeal 2357 says, however, if the parliament makes laws in respect of certain subjects falling in the state list or the concurrent list, this is referring to Delhi, the executive action of the state must conform to the law made by the parliament. ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, मेरा नहीं है। तो ये पहला विषय है जो मैं आपके पास रखना चाहता हूं, why the parliament has the legislative competence to bring something here. Second, 11th May 2023, sir, Supreme Court का judgment आता है in civil appeal again 2357 by Justice Chandrachud, Justice M.R. Shah, Justice Krishna Murari, Justice Hima Kohli and Justice Narasimha. Para 164 को मैं रेफर करना चाहता हूं, subsection C. What does the judgment say? In addition to the entries in list 1, Parliament has legislative competence, and I repeat, has the legislative competence over all matters in list 2 and list 3 in relation to NCTD, National Capital Territory of Delhi. तो ये दूसरा विषय है। 2018 के बारे में मैंने बोला, 11 मई 2023 का जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का,
उसको मैंने उल्लेख किया। अब मैं तीसरे विषय पर आता हूं। जुलाई 20, 2023, अभी कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का और एक जजमेंट आता है इन रिट पिटीशन 678 ऑफ 2023। ये आता है चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा का। एंड ऑन पेज 10, पैरा 17, ये जजमेंट क्या कहता है आखिरी पैराग्राफ में, और ये क्या विषय था मान्यवर? ये विषय था कि दिल्ली एनसीटी ऑर्डिनेंस जो है उसको जो है आप स्टे प्रोवाइड करें, सरकार को बोले कि दिल्ली एनसीटी ऑर्डिनेंस को वो कहीं ना कहीं से इंप्लीमेंट ना करें। दैट वाज द प्रेयर। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है और आखिरी लाइन में सुप्रीम कोर्ट सेज, एंड आई कोट, IA number 13050 of 2023 seeking a stay of the NCT ordinance is dismissed। तो स्पष्ट तौर से सुप्रीम कोर्ट ये जो प्रेयर किया है एनसीटी ऑर्डिनेंस के बारे में उसको डिसमिस कर देता है। तो ये जो बार बार कहा जाता है that the legislative power does not exist because the matter is pending, that is on a separate matter, not on the matter dealing with July 20th, 2023। तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास जो मैटर गया है वो मैटर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास मैटर दिल्ली एनसीटी का नहीं गया है, क्या है? What are the contours of power of parliament to enact a law under article 239AA7 and whether the parliament in the exercise of its powers under 239AA7 can abrogate the constitutional provisions of governance for NCT। So Delhi Ordinance Bill specifically is not being placed before the constitution bench। The points of law, जो दो points of law है वो प्लेस किया गया है, ये स्पष्टता होनी चाहिए। Then I come to Constitution of India, संविधान पे आता हूं। 2018 जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट मैंने बोला, 11 मई सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोला, 20 जुलाई सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोला। अब मैं संविधान पे आता हूं। संविधान धारा आर्टिकल 239AA सब क्लॉज 3B क्या कहता है मान्यवर? Nothing in subclause A shall derogate from the powers of Parliament under this Constitution to make laws with respect to any matter of a union territory or a part thereof। तो पार्लियामेंट को पूर्ण अधिकार मिलता है कि अगर आप ऐसी कोई भी लॉज आती हैं तो पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट कैन नॉट बी